हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक वुमेन्स रेसलिंग के मैच के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। टाइटल है रेबेका स्कॉट वर्सेस निकी ड्यूक, CCW पेबैक। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ओह, आते ही शुरू। No, I mean, sparing no यस, time. नो Rebecca वेस्टेज Scott ऑफ getting टाइम। right into the thick of things with Nikki Duke, someone that we've acknowledged no strangers to one another, have faced each other a handful of times, and actually, Rebecca Scott was Nikki Duke's first match of her in-ring career. What a full circle moment to be challenging for the Global Fighting Championship here at CCW. But like we noted earlier, Rebecca Scott, CCW Return of the Year, and ever since she's returned, she's been laying down a path of destruction in front of her. There is no doubt about that. Such impressive skill we have seen on display. Been seeing a lot of MMA. ये स्मॉल स्केल रेसलिंग है क्या? लाइक प्रीवियस मैचेस हमने बहुत ही बड़े स्केल पे देखा था। बहुत स्मॉल स्केल लग रहा है, लाइक छोटा सा ऑडिटोरियम लग रहा है, छोटे थोड़े से ऑडियंस लग रहे हैं। पहली बार देख रही इस तरह का मैच। You know, Alyssa, you noted these two was Rebecca Scott's first matchup, and these two trained together in real life too, so they know each other's movesets and repertoires inside and out, so that's an even extra layer that Rebecca Scott now has to overcome in the corner. Beautiful display of athleticism from Nikki Duke there. Yeah, Nikki Duke, the former junior Olympic gymnast, showing that incredible acrobatic ability. Rebecca Scott straight to the midsection. The flurry of knee strikes, and has Nikki Duke bear down on the mat. You know, Rebecca Scott said that CCW was her home, and Nikki Duke walked into her home uninvited, you know, and that's a tough thing to say for two former friends here now. Shoulder crush. Former friends, definitely not on the friendliest of terms. I think, if I'm not wrong, I think Megan Bayne is the only one that both of them kind of get along with from their training group. Yeah, and Megan Bayne we saw initially when Rebecca Scott won the CCW Global Fighting Championship way back a couple months ago. And returning back to action, it looks like Rebecca Scott trying to break the arm of Nikki Duke. It'll be hard to do any back handsprings. One incapacitated. She's not leaving that arm. Now wrapping it around the middle rope and getting right in the face of referee Nick Shin. She may be small, but she is mighty. You know, we talked about training. She's been taking up BJJ training and really upping her game here in her recent matches. Okay, but the shoulders are down. Not enough for a new champion. Could you imagine walking into CCW in your in-ring debut and walking out as the Global Fighting Champion? A lot of eyes are on Nikki Duke right now, Alyssa, to say the least. But you know who else is watching this matchup? The new #1 contender, Gabby Ortiz. And too, we did see Rebecca Scott so confident that she would be walking out of this match and still Global Fighting Champion, that had her eyes on the on the #1 contenders match earlier tonight. Rebecca Scott now taunting Nikki Duke. Oh, and now again, all that damage on the arm, on the shoulder of Nikki Duke. She's targeting her arm, shoulder. Rebecca Scott seeming very pleased with her work so far. They have to keep an eye out for that double arm bar, double submission. Looks like Rebecca Scott is kind of toying with Nikki Duke, but obviously now Nikki Duke fighting back. Gets the boot up, and Zakiri straight to the cheek of Rebecca Scott, who's now in a heap, trying to fight her way back to her feet. This is the window of opportunity
that Nikki Duke needs to get back into this matchup, or can she capitalize on it? Looks like she's trying. Laying her out. Yeah, gymnast. Oh, goodness. Incredible showing. Could we see a new champ? Come on, don't waste time. Very impressive front handspring clothesline. All of the years of gymnastics since she was roughly 4 years old on display for Nikki Duke. Duke said she plans to come out of here showcasing her dominance. Wants to do it as the new CCW Global Fighting Champ. Will we see it? Rebecca Scott defiantly kicking out at 1 here. Now, scaling Oh, up. Rebecca is getting up. Yeah. Oh, but caught by Rebecca Scott, Nikki Duke, down on the mat. Okay. Not enough to keep her down. Both are strong, yeah. Don't argue with him. First finish your fight, man. About her long-time stay here at CCW, but you gotta keep your eyes on the prize if you want to keep your championship. Nikki Duke looking to go for a second try at up top. Will it pay off this time? Not sure. See? And the moonsault, but it doesn't get Rebecca Scott to roll out of harm's way. Rebecca Scott, the more experienced of the two, not by much, but definitely has that in-ring awareness, and now putting an arm bar to Nikki Duke. Oh, that's she's it. tapping out. Nikki Duke taps out. Here's your winner. Rebecca Scott. Global Fighting Champion, Rebecca Scott. A great showing No, by no, Nikki no. Duke in her CCW debut. Hold on. I don't think Rebecca Scott's done. Rebecca trying to make an example of Nikki Duke. The match is over. Duke is tapping. Nikki Duke trying to do anything in her power to try and make that submission end. But it's on Rebecca Scott's turn, Ella. And one thing's for certain, Rebecca Scott now has to pivot her focus now to the gift of Yeah, gab. boo. Gabby Ortiz now, Maybe as boo. she earned her spot. Rosaria here with Rebecca Scott. Tonight you just successfully beat Nikki Duke for the Global Fighting Championship. And I have never seen you that intense. How are you feeling right now? Did you have any doubt that I was going to do that? Because, again, I'm a broken record here. Every time I'm here, I tell you what I'm going to do before the match, and nobody believes me. Maybe now we're going to really start respecting me, right? Absolutely. I went out there, I showed what RJS can do, and now I'm ready for a more worthy opponent. And speaking of that, up next, you have Gabby Ortiz. Yes, Gabby Ortiz. It's really cool being here at CCW because I feel like I just went out and I picked my own opponent. Right? That's kind of how it happened. I say what goes, and anybody who has a problem with that can come do something about it. You heard it here from Rebecca Scott herself. Yeah, I heard it and I have an opinion on that. Okay, first of all, अगर ये चैनल से कोई ब्लॉग आ जाएगा अपलोड करते वक्त तो I'll just make some cuts and upload it on YouTube and you can watch the full video on my Patreon page by joining the membership. Okay? अच्छा, मैं पहले ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे इन दोनों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं. I haven't seen Rebecca Scott, I haven't seen Nikki Duke. This is my first time watching them. तो मुझे ऐसा लगा कि जब जिस तरह से वो रेबेका, मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं सुना है, as soon as I started the video, like रेबेका आ जाती है, सिर्फ उनका नेम प्लेट पढ़ा है मैंने, वो आ जाती हैं and then she starts fighting without any delay, like without wasting time, कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, just आ जाती है, एंट्री हो जाती है उनकी और you know wrestling शुरू कर देती है. She was very aggressive, yeah. As a wrestler, she needs to be. She has to be क्योंकि वही काम है उनका, जो एग्रेसिव होता है, जो इंटेंस होता है, वही जीतेगा. तो आई थिंक
शी वॉज ऑल्सो नॉट वेस्टिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट बीच में शायद वो थोड़ा वो एग्रेसिवनेस की वजह से, वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि टैप कर रहे थे ना, सिर्फ 2 बार हो रहे हैं तो तीसरी बार क्यों जल्दी नहीं कर पा रहे, बोल के जो अंपायर की तरफ फ्रस्ट्रेशन दिखा रही थी ना, तो आई थिंक उसकी वजह से वो जो आर्गूमेंट कर रही थी वो थोड़ा टाइम वेस्ट लगा था। उसके अलावा वो कहीं भी मुझे नहीं लगा कि शी वॉज वेस्टिंग टाइम। शी वॉजंट गिविंग मच टाइम फॉर निकी टू गेट अप एंड फाइट बैक। तो मुझे निकी ड्यूक का भी ऐसे लगा था, शी इज़ ऑल्सो गिविंग हर बेस्ट, बट जिस तरह से वो बार बार रेबेका आके उनके शोल्डर के ऊपर अटैक कर रही थी, एंड निकी वॉज ऑल्सो लाइक शी वॉज ऑल्सो वेरी रिलेंटलेस, वो हार नहीं मान रही थी, वो भी फाइट बैक कर रही थी। एंड जिस तरह से दोनों एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे कि ताकि वो उठ के फिर फाइट बैक कर सके, वो मुझे अच्छा लगा। ये बहुत फास्ट पेस मैच लगा कंपेयरिंग टू द अदर एंटरटेनिंग मैचेस। ये थोड़ा पता नहीं क्यों, बट मुझे इन दोनों के बारे में इंडिविजुअली कुछ भी पता नहीं, तो कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, बट जस्ट हैज़ अ फर्स्ट टाइम वॉचर तो मैं ऐसा नहीं सोच रही थी कि एक को ही सपोर्ट करूं। मैं ऐसा मुझे किसी के बारे में पता नहीं था, तो ऐसे ही सपोर्ट कर रही थी कि जो ज़्यादा मार खा रहा है वो एटलीस्ट फाइट बैक कर सके, वैसे सोच रही थी। बट लास्ट में आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी रेबेका स्कॉट निकी को हरा देगी। लाइक वो निकी का जो लेफ्ट शोल्डर पे ज़्यादा अटैक कर रही थी ना, वो लेफ्ट शोल्डर भी नहीं था, राइट शोल्डर को उन्होंने लास्ट टाइम जो जीता उन्होंने टैपिंग, तो राइट शोल्डर को उन्होंने ज़्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश की। बट आई वॉज लाइक मुझे मेरे दिमाग में ये था कि अगर राइट शोल्डर पे ज़्यादा स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैच राइट शोल्डर्स पे ज़्यादा अटैक कर रही थी, तो वो हाथ पकड़ती तो जल्दी टैप करने में वो थोड़ा रीजनेबल लग रहा था। बट सडनली लेफ्ट हैंड को एक बार पकड़ने से उन्होंने इतनी जल्दी हार मान लिया, तो मुझे थोड़ा लगा डिसअपॉइंटिंग लगा निकी की तरफ से। बट एनीवेज पता नहीं वो ट्विस्टिंग दर्द होता होगा बट जितना उन्होंने राइट हैंड पे स्ट्रेन लिया है उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ऐसा लगा मुझे। एनीवेज वो थोड़ा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि और थोड़ा फाइट बैक करती तो शायद लास्ट में जीत जाती। एंड आफ्टर द मैच जिस तरह से फिर से रेबेका ने अटैक किया निकी, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लाइक ओके यू हैव वन द मैच तुमने बेल्ट जीत लिया तो एन्जॉय, सेलिब्रेट योर विन, जस्ट गो बैक स्टेज एंड गिव योर इंटरव्यूज एंड टेक केयर ऑफ योर फीलिंग ऑफ विनिंग। बट वो फिर से अटैक करके चोक करने की कोशिश कर रही थी निकी को, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि शी वॉज टेकिंग द पर्सनल ग्रज की, जो मैच के दौरान 3-4 बार जो टैप करवाने की कोशिश की, जो हुआ नहीं, तो इसलिए शायद वो फ्रस्ट्रेशन दिखा रही थी लास्ट में कि तुमने इतना टाइम वेस्ट किया मेरा, पहले ही हार जाती तो ठीक होता, ऐसा लगा मुझे। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वो क्या बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक वो नहीं ले रही थी एक एज अ जेंटलमैन्स गेम बोलते हैं ना, जेंटल वुमेंस गेम भी उस तरह से वो नहीं ले रही थी, तो वो थोड़ा पर्सनल ग्रज निकाल रही थी, वो थोड़ा नेगेटिव में गया। एंड लास्ट में जिस तरह से वो बात करके, पता नहीं उसका क्या था दिमाग में, ओवर कॉन्फिडेंट था क्या था पता नहीं, बट जिस तरह से वो बात कर रही थी, उसका एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे लगा शी इज़ कम्प्लीटली ओवर कॉन्फिडेंट। एंड उस टाइम मुझे लगा यार निकी जीती तो अच्छा होता। एनीवेज मुझे वैसा लगा देख के। आई एम नॉट श्योर कि हाउ बिग इज़ रेबेका स्कॉट और हाउ बिग इज़ निकी ड्यूक, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो मुझे पता नहीं। मैं पहली बार देख रही हूँ और पहली बार सुन भी रही हूँ इनके बारे में। एंड ये जैसे मैंने मैच के दौरान कहा था कि ये बहुत ही डिफरेंट रेसलिंग मैच है जो मैं पहली बार देख रही हूँ, कि बहुत कम ऑडियंस से है, छोटा सा ऑडिटोरियम लग रहा था। एंड जिस तरह से रिंग बना हुआ था वो भी डिफरेंट लग रहा था मुझे, एज नॉर्मली जिस तरह से मैं अब तक दिखते आई हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट था। एंड आई डोंट नो मुझे थोड़ा अजीब ही लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई प्रोफेशनल रेसलिंग मैच देख रही हूँ। मुझे जब तक हम एक या 3-4 मैचेस नहीं देख लेते हैं तब तक हमको वो फील नहीं आता है कि हमने देखा है। तो शायद इसलिए मेरा पहला मैच है, इसलिए इस तरह का मैच पहला है, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार
ये वैसा मैच नहीं है जो अब तक मैं देखती आई हूँ, तो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, बट ओके उतना पसंद नहीं आया, बट या ठीक ही था। एंड रियली रेबेका ओवरऑल अगर मैच के बारे में बताया जाए तो निक्की मुझे फाइन लगी। शी वॉज लाइक जिमनास्ट, बोल रहे थे बीच में कमेंट्री में मैंने सुना कि वो प्रीवियस जिमनास्ट थी, तो बीच बीच में जो जिमनास्टिक्स कर रही थी तो प्रूव करने के लिए वो, तो या शी वॉज गुड एट इट। एंड रेबेका स्कॉट का मुझे वो थोड़ा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, वो एक थोड़ा मुझे खटक रहा था अभी भी, क्योंकि इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन जीत गया है तो लगता है ना बुरा। एनीवेज ठीक ही था, पहली बार देखने के लिए पहला एक्सपीरियंस इस तरह का मैच का ओके था। आप लोग बताइए आपको कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।